अस्सलाम वालेकुम। इस गर्मियों में हमने डिसाइड किया कि हम अपने आबाई घर के छत को जो है ना उसको रिपेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ये छत जो है ये बड़ा पुराना है, ऑलमोस्ट 40 साल पुराना है, तो इसका लेंटर जो डले हुए हैं वो पीसीज में डले हुए हैं, क्योंकि उस वक्त मशीनें तो होती नहीं थी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे जोड़ थे वो सारे जोड़ एक दूसरे को छोड़ गए हुए हैं, उसमें काफ़ी सारे क्रैक आ गए हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो बीच में लैंड जो ओवरऑल इसका अपना लेवल था पानी का वो भी ख़राब हो गया हुआ है। तो अभी जब बारिश होती है या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो पानी या तो इकट्ठा हो जाता है, और जो पानी बच जाता है वो क्या करता है कि वो इन क्रैक्स के अंदर से जाना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ। तो हम आपको शुरू से एंड तक दिखाएंगे कि इसको हमने किस तरह से रिपेयर किया, इसका कैसे हमने सलूशन किया। मेन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी लेंटर बीच बीच में से बैठे हुए हैं। तो अगर वो हम इसके ऊपर चिप्स करने की ट्राई करते या इस तरह की कोई भी चीज़ करते तो ये मज़ीद बैठ सकता था। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और आलमोस्ट ये यहाँ पे हमें 7 से 8 इंच माल डालना पड़ना था अगर हम इसको चिप्स डाल के इस पर रिपेयर करते या इस तरह का कोई भी काम करने की कोशिश करते। कुछ जगहों पे ये क्रैक जो थे ये काफ़ी बड़े थे, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जो था ना वो इतने बड़े क्रैक्स नहीं थे। यहाँ पे स्पेशली जो सेंटर था ये थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो गया हुआ था, कि आई डोंट नो वेट की वजह से या किस चीज़ की वजह से, लेकिन ये थोड़ा डाउन हो गया था। सबसे एक जो मेजर मसला था कि हम इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं कर सकते थे कि इसके ऊपर ऑलरेडी लुक डली हुई थी, लुक की एक तय डली हुई थी। तो अगर हम इसको प्लस्तर करने की ट्राई करते या चिप्स डालने की कोशिश करते तो वो इसने लेंटर के साथ पकड़ नहीं करनी थी। तो इस लुक को तोड़ने के बड़े सारे तरीके हमने देखे। तो एक जो हमारे लिए काम किया वो यही था कि इसको हाथ के साथ हम इस तरह चिपिंग करें, यानी कि मैनुअली लेबर के साथ हम इसकी चिपिंग करें और इसको उखाड़ दें इसके ऊपर से। देन हम लेंटर के ऊपर डिफरेंट जगह के ऊपर ग्राइंडर चला के जो था ना वो लेंटर काटने वाली डिस्क के साथ, तो उसके साथ इसको थोड़ा सा रफ़ कर सकते थे ताकि इसके ऊपर हम काम कर सकें।
इन क्रैक्स के लिए हमने डिसाइड ये चीज़ की कि हम इसके ऊपर ना मार्बल लगा दें। उससे दो फ़ायदे थे। एक तो ये कि हमारा हर एक कमरे का अपना अपना लेवल निकल जाएगा और उसके ऊपर पानी नहीं खड़ा होगा, और दूसरा ये कि हमें कम से कम मटेरियल डालना पड़ेगा इस सारे छत का लेवल निकालने के लिए। मार्बल का ये भी एक बड़ा फ़ायदा होता है कि इसके नीचे से पानी नहीं जाएगा नीचे। तो जो हम क्रैक को सेव करना चाह रहे थे कि वहाँ से पानी ना नीचे जाए या सेम ना नीचे जाए, तो वो चीज़ हमें इस मार्बल से अचीव हो गई। Every time I see you,
छत को हमने सेंटर से ऊपर उठा दिया ताकि जो आधे हिस्से का पानी होगा वो एक साइड पे चला जाएगा और आधे हिस्से का जो पानी होगा वो दूसरी साइड पे चला गया। इस साइड पे ये जो है हमारे पास मार्बल कंप्लीट लग चुका है। अब हम एक एक कमरे का अलग अलग से प्लस्तर करके उसका पानी जो है उसको बाहर निकाल देंगे।
ये सारा कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी का बिल्कुल लेवल ठीक है। अब बिल्कुल पानी इसके ऊपर किसी जगह पे भी खड़ा नहीं होता। ये देखें एंड पे आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट फिनिशिंग जो कि हम करना चाह रहे थे इसके ऊपर। प्लास्टर करने के बाद हमने उसके ऊपर वाइट सीमेंट लगा दिया ताकि जो प्लास्टर के ऊपर के मसाम होते हैं वो भी बंद हो जाएं और पानी की बिल्कुल जो सेम है वो नीचे की तरफ ना जा सके।